So now we have integral 1 minus x into root x dx. इसको भी हम मल्टीप्लाई आउट करेंगे अंदर में, इंटीग्रल 1 into root x dx minus integral x into root x root x dx. Now we know that root x can be expressed as x to the power half. So x to the power half dx, यहाँ पे हो जाएगा x into x to the power half dx. This is integral x to the power half dx minus integral, now this is x to the power 1 into x to the power half, that is x to the power 1 plus half, वो हो जाएगा x to the power 3 by 2 dx. अब हम दोनों में ये रूल अप्लाई करेंगे, x to the power half के लिए होगा x to the power half plus 1 by half plus 1 plus x to the power 3 by 2 के लिए x to the power 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1 प्लस फाइनल इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, x टू द पावर 3 by 2 by 3 by 2, 3 by 2 पर पलट जाएगा तो 2 by 3 x टू द पावर 3 by 2 प्लस 3 by 2 प्लस 1, यहाँ 5 by 2, ऊपर भी 5 by 2, ये 5 by 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा पलट के 2 by 5 x टू द पावर 5 by 2 प्लस c. ये होगा हमारा रिजल्ट.